अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फौजिया खान एज यूजुअल आपके साथ हूँ। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया था कि मुझे 1 मिनट भी नहीं बख्शा गया। फर्रुख खान ने फ़ौरन ये लिख दिया कि मैम वेटिंग फॉर दिस। तो आपको पता है इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स की एफर्ट क्या होती है। आज तो मैं एक बात से आगाज़ करती हूँ। आज मेरी एक यूएस डेलीगेशन के साथ मीटिंग थी मॉर्निंग में, और हम उसमें डिस्कस कर रहे थे वो चीज़ों को, बात को। तो हमने ये बात उसमें ये बात हुई कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतने एंटेंगल हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि मतलब चीज़ें, ये काम करना है, वो काम करना है, यहाँ पे ये जल्दी है, इस टाइम पे ये सिनेरियो मीट कर लिया जाए। हम ये भूल जाते हैं कि हम जी क्यों रहे हैं। क्या हम सिर्फ काम करने के लिए जी रहे हैं? अगर हम सिर्फ काम करने के लिए जी रहे हैं तो Hi. अगर हम सिर्फ हाय Hi, Fauziya. How are you? या हाय Amy, just give me a few Yeah. minutes, let me speak to them, and then I'll ask you to join it. Okay. All right. सो हम उसमें ये भूल जाते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, जी किस लिए रहे हैं। क्या सिर्फ काम करने के लिए? काम क्यों करते हैं हम? पैसे कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाते हैं? पेट भरने के लिए। पेट क्यों भरते हैं वो चीज़ों के लिए? ये तो मतलब एक, मैं इंसान होते हुए मुझे क्यों करना चाहिए? ये तो एक जानवर भी कर लेता है। कभी हमने ये सोचा है कि इस सिनेरियो में हम सब के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि हम किसी के लिए कोई भला कर दें, लेकिन उसके ऊपर एफर्ट नहीं डाल पाते। और वो जो चीज होती है 20 साल के बाद, बाकी ये चीजें, ये काम फलाने ये किया, उस दौरान ये हुआ, मैं मतलब मेरी किसी ने टांग खींची, किसी ने ये पकड़ा, वो सारी चीजें सेट असाइड हो जाती हैं। जो चीज रह जाती है वो आपका जो अच्छा मतलब काम किया हुआ होता है आपने, वो चीज जो की हुई होती है वो रह जाती है आपकी, उसको लोग याद रखते हैं। और काम कुछ करने के लिए, किसी का भला करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? बेसिकली सबसे पहले हमें अपने करीब तरीन लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, उनके लिए अच्छा करना चाहिए, उनके लिए भला करना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने चीजें स्टार्ट की, दुनिया बनाई, तो उसमें ये जो फैमिली बनाई, ये कबीले बनाए, ये लोग बनाए, वो क्यों बनाए हैं? बेसिकली हमें ये नहीं कहा गया कि मैं उठ के मतलब पूरी दुनिया के वहां पे जाके कोई हजारों मील दूर तो वहां पे उनके लिए काम करूं या उनके लिए कुछ अच्छा करूं। मुझे सबसे पहले जो अच्छा करना है वो अपने करीब तरीन लोगों के लिए अच्छा करना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए अच्छा करना है। और उसको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो हमें दी जाती है वो हमारे बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल है, और हमने उनको बेहतर तालीम देनी है, बेहतर लाइफस्टाइल देना है, बेहतर स्टैंडर्ड्स देने हैं। अब वो बेहतर लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड्स, तालीम देने के लिए जो हम एफर्ट डाल रहे हैं वो आज आपके साथ है। कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम मतलब यहाँ पे अपने आप को पेश करके ला के किसी एक हाई स्कूल का बच्चों का बाहर पढ़ना क्यों सोच रहे हैं। नॉर्मली जब हम जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाद वहां पे जा रहे होते हैं, तो क्या हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई है? और वो अपॉर्चुनिटी क्या है और कहाँ पे हम बच्चों को लेके जा सकते हैं, भेज सकते हैं, और बच्चे आगे क्या करेंगे? उन सारी चीजों के लिए I'm sorry, I have to introduce in English थोड़ा सा वो चीजों के लिए। I have with me Elite High School, the principal of Elite High School. She will be joining us, and Mr. Faisal Malik will be joining us to discuss in detail the stream and everything about. Let me take first on board Miss Emilio. Um, Am I yes, yeah, am I now go live? I would like, yeah, yes, I mean you, and I would like you to introduce yourself, and then I will be asking few questions from you, which is like, over here in my country, most of the people who are listening to my program are basically, very much familiar with the native language, which is Urdu, and that's difficult for you to understand, might be. So for that, I will be, we will be discussing. I have
few questions which I wanted, like the people should know about, so that we could tell them why children or the students should move from Pakistan to Canada for education purpose at this stage. Because I mean, I have no idea whether you are familiar with it or not. Because earlier people used to go move to Canada, or to migrate to Canada for the purpose of after high school, post grad studies, to the college or the university. They had no concept of sending the children from Pakistan for the studies, or having them over there at this age, when they need a custodian, and when they need a guardian over there in that country. And the person, whether the parents, usually those people move over there, who were already somehow migrated. Either they were on a temporary work permit, or they were had a proper permanent residency, or immigrated to that country. Now, Yeah. as we have introduced elite high school, the trend is going to be different, which is more likely after the pandemic situation. People are, when they got to know that they are, online studies and asynchronized studies are available, only then they have joined. So I would like you to introduce Emmy a little about that, and then I will be asking you the questions, please. Okay, thank you, Fauzia. And it's very nice to meet you on the other side of the earth at this early time in Toronto. And today's Yeah. windy and cloudy, so I'm very honest. This is my first time using StreamYard. So I might Okay. need some tech support because I'm not able to go to office this early. And yeah, if there's a voice not clear or something popped up, please help me. I know there are a lot of genius in Sure, sure, Pakistan. Emmy. Sure, Yeah, Emmy. I visited the country a couple months ago, and people there are very kind to me. It's a very interesting and very authentic culture. And for current time, I'm still studying in University of Toronto in a leadership education and a policy program, which is for principal of high school, university, college through the Canada to upgrade our knowledge and the license. So in my Mhm. class, in my course study, I have met a lot of colleagues from Pakistan and who are on scholarship. In they're Wow. brilliant people. They're brilliant people. Yeah, most of them have been serving the education sector in Pakistan. Some of them are or used to work in the government, and all of them are pursuing PhD degree. So, and because they're on scholarship, apparently they're very brilliant. So I have a very good impression and the image about this country. And by this opportunity, I also get to know the culture, the history, and the food of the country. And That's amazing. I thought you might not be, it's too spicy for you, or you might not be liking it, because this is what happens when you move to this country. People are more enthusiastic, more passionate. I think the behind that, what works is food is a major factor as well. So, yeah, the food is amazing. Everybody give a thumbs up. Yeah, all right. so speaking of that, because Canada is a diverse country, we are a multinational country. We have welcomed more than 200 nationalities coming to this country as a settle down, either in workplace or in school. So Canada has a very diverse education system as well. If you allow me, can I share my screen because I prepared a little bit of presentation to answer the questions that yesterday my colleague sent me the questionnaire. Most of the questions from I guess from the audience or from parents, they're interested. So I did some preparation. Is it possible for All me right. to share Let me screen? first take, yeah.
I mean, let me first take Mr. Faisal Malik on board as well because Okay. he has joined us. So let me take him on board as well so that we could go for the further questions and giving the details about elite high school and the educational system. So Yeah. uh, I would like to welcome Mr. Faisal over here with us. And Hi. Assalamu alaikum, Faisal. Hi guys, how are you doing today? Thank you very much for having me, Fozia. Once again. Um, yeah, Faisal, we are here to introduce basically the educational system for the high school. And I would like, I have many questions which kept on, like Mm. people kept on asking me. And I thought it's better, like the person who's directly representing the school and the courses, they could, clearly say it to the audience so that they could, know later on even having the I was just discussing in detail with the Emmy, like she introduced, and we will move on to the questions. More likely I would like Emmy to answer those questions because I just want to know the teaching strategy over there, how what the methods have been used, and how do we compare with the education of Pakistan. So Emmy, I would like you to give us little detail about that. Okay, sure. So I can now do the sharing screen that we usually do in Zoom meeting. Can we? I mean, you could do that, but I Mm-hmm. think I have no idea whether because I haven't used it. Yeah, Okay, maybe so this is this like you is can share the the screen. yep. I have no idea whether you can share it properly or you cannot because uh, let me check as well. Okay, because I prepared the informative graphics yesterday. I think it's better to give a visual presentation that help the Uh, audience uh, to understand because the language difference, right? So yes, let me you are right. yeah, I mean, but yeah, I have no idea. Trust me, because it's okay. even sharing the I screen, whether you are the host or I am the host, because this matters when we are using any software like that. So I can't say like we can share the screen or not. So you can, explain it the things on your own. Next time, maybe we can share the screen and we can move on to that. okay. Yeah, I am doing it right now. I think I'm on it because of I think Amy clicked some wrong button because of something. This is like using the StreamYard. It was earlier for her. It's a new something new software and new she's using it as पहले से उन्होंने बता दिया इस चीज के लिए तो मुझे लगता है कोई गलत बटन क्लिक हो गया ये चीजें इस तरह से शुरू हो गई तो मैं उसके लिए अभी आई अपोलोजाइज फॉर दैट कि कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो हम उस चीज पे नहीं कर सकते बाय टिल दैट टाइम आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर मलिक कि वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दें फैसल आप बता दें हाई स्कूल के बारे में और उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कि किस तरह से जब बच्चे यहाँ से जाते हैं पढ़ने के लिए तो क्या है मतलब व्हाई इट इज डिफरेंट बच्चों को मूव करना चाहिए मेरे बहुत सारे लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं और मैं ये चाहूंगी कि उनको डिटेल sorry. पता चले Yeah, it's just cut me No off. issue, no Don't know issue. why. Emmy, we will take a moment. Let Faisal first say a few things. So then we will, because I already told you the audience, my audience use the native language, which is Urdu. So I will be translating that later on as well. So let me ask, or you go ahead, please. Faisal, I'm so sorry for that. It's all right. I Emmy बता दें तो so that we both could translate that हम बता देंगे उनको फिर उसमें language में अपनी में ताकि उनको समझ भी आ सके I would like you to translate that so that people could understand that sure. जी Emmy yeah Amy, please go ahead and start your narrative. Yeah, I just wanna know, can you see my screen? yeah I mean I think somehow you got successful in doing that but I have Okay. no idea yeah
Okay, as long as you can hear me and see my screen, that'll be fine. So, Yeah. Wow. Faisal, can you see my screen? I am. I'm able to see that. Thank you. Okay, perfect. Yeah, so I consider because there is a language difference, I think it's better to, do some Sure. visual presentation to help them understand in a better way. I appreciate. Um, Well done, Nami. Because I had no idea if I could do that. It's okay. Yeah, so speaking of the benefit of having a Canadian high school diploma, I think most of the students or parents might have some prerequisite knowledge. As we all know, Canada is the third largest country, which is exporting. Actually, I'm using export this word is exporting our education, specifically higher education, to worldwide countries. Because Canada, as I mentioned before, is a diverse country and with the multinational, multi-language culture behind the just stamp on the passport. So our education is worldwide recognized by most of the countries. I'm not saying North Korea or some like most of the countries accept a Canadian diploma to for student to enter a post-secondary institution or even higher education. Elite Okay. high school is and the private school in Canada is a paralleled with public school. So we both are inspected and managed by Ministry of Education because of Canada is a democracy country. So our education policy is regulated and inspected by province. Our school is operating in Toronto as the capital city of province Ontario. That is why we have this Ontario inspected license for private school to accept a student and grant a diploma, and as well, of course, teaching. And the benefit of a Canadian high school diploma is like, if you can see from my screen, actually, I prepared a little bit. Can you guys see my the Yeah. diploma that I'm holding in hand? Yes. Yes, I Yeah, mean, we so can see that. yeah, this is the diploma I just ordered and received from Ministry of Education because I need to sign it and grant to student. Then when student got the student gonna maybe prepare a beautiful frame to put it up. And this diploma is recognized mm, by 90% almost all the countries around the world. If you want to apply university or colleges in other country, um, you just need to ask our school to provide you this transcript, Ontario student transcript. Yeah, with Okay. the government stamps and the government endorsement. And we also now, because of pandemic, we also provide a digital version. Before there wasn't a digital version, it was sent by school to another school where students want to go to. So now we have got a recognition from Ministry of Education to get the endorsement on digital version as well. So student in Canadian school is very different from other countries since I'm also doing the research in my graduate school to compare different education policy between countries, between states, and between nations. That I think I'm not saying I'm the best person to speak for it, but at least I'm not the worst person to speak for the differences. And comparison is here. Yeah, the Okay. comparisons of teaching. That a question on the questionnaire number one. Um, different from Pakistan and Indian and some other countries.
Canada has this mission in education, which is called equity. So all we talk about is to provide a student equal opportunity to get education and to make up the gaps in gender difference, in background difference, language difference, to pursue equitable education, which is according to the United Nations highest commission of sustainable development in education. So education addresses equality and equity more than anything, and will also promote inclusiveness and individualism. For example, from my observation, and some of my colleagues shared with me, in Pakistan or Indonesia or even in China, most of the schools have like big size class, right? 30 to 40 students. Some area they even have 60 or 70 students sitting in one classroom, and Okay, teacher in like one doing the classroom. solo. Yeah, Don't like you think, that was. I'm sorry for the interruption, Amy. It's okay. Yeah. Don't you think, like, more than 30 students, it's like difficult to focus on, or, having them, we can't give them individual attention? Yeah, absolutely right. We're all humans. Teacher is a human too. So teachers' attention can be only directed to one student or two students. Then of course the Mhm. best scenario is to be directed to only one student, then you get a one-on-one attention, and all the engagement and devotion in the course study going to be very concentrated between the teacher and the student. That is why like the other day we have my class had a discussion as well. What is education? Is it education just the traditional way? You listen to the lecture and you listen to teachers shouting and yelling without really understanding what the literature means and absorbing it into your brain and applying it into real life. So that is always some criticals in education. So now in Canada, specifically in Ontario, we have this provincial law to regulate the class size no more than 26 students. Before it was even better, before it was 22. And now, because of the budgeting issue, so government increased it to 26. But between private school and public school, apparently private school have more advantages. We can provide even smaller size class. Usually in elite high school, our class size in-person teaching, like this is I have to laugh at it. It seems like a history. Now it's like a prehistorical caving age, right? We haven't been in-person teaching for 2 years. Before we have the class, and in each of the class we have 1 to 5 average ratio between teacher and student, and maximum our policy is no more than 10 students in one classroom. So you For can the imagine online one. education you're talking about, I'm sorry, Amy, this is No, like no, in class. five No, students in in one class? person. Because you In mentioned person. here that the province is allowed to, now the restriction is there for no more than 20 or 22 students, none of the Yeah. schools. Is it for the private and public schools both, or this is Yes. specifically for the private schools? No, this is for all schools. All Like in the schools. beginning, yeah, in the beginning, I said so. Canada and America, we are the same education system. We have the provincial education policy to be applied across one province. In the other province, it might be slightly different, but the highest commission going to be the same. But the regulation, the policy, for example, numbers of students in British Columbia, in Vancouver, um,
if I'm not wrong, the current rate is 1 to 22. In Quebec is 1 to 20. Alberta maybe a little bit between 20 to 22. Ontario, because we have a largest population, so we increased to 1 to 24. And it's the same between public and private. Yeah. For the just give me a little break, I mean, so that I could ask Faisal to translate it. It could be easier for the persons to understand quickly. Faisal, if we can go through whatever Amy has explained, so that we could tell our audience in our language as well that what she has still up till now talked about, and what are the options, and what is happening actually for the school. Right. According to the government policies. First of all, pardon me. I mean, I'll have to speak in the local language so the audience of Fozia would be able to understand exactly to the word of what you're actually talking about. So, Fozia, as per Amy, जैसे पाकिस्तान में, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किया था, पाकिस्तान के अंदर या साउथ एशिया के अंदर एवरेज क्लास साइज होता है 30, 40, 50, 60 स्टूडेंट्स का। तो उसकी वजह से टीचर की अटेंशन स्पैन एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कम रहता है, जिससे स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग वैसे डेवलप नहीं हो सकती है जैसे होनी चाहिए। और यही डिफरेंस है नॉर्थ अमेरिका की एजुकेशन को दुनिया में टॉप की एजुकेशन इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे खाली एजुकेशन एज इन बुक्स को नहीं देखा जाता, बल्कि किस तरह से पढ़ाया जाएगा, टीचर्स की explanations क्या होंगी, case studies, the method of teachings, the markings and all that stuff, everything gets considered. तो कनाडा के अंदर ओंटारियो में हाई स्कूल्स की रेशियो 1 क्लास में 22 स्टूडेंट्स की है, जो कि लॉ है प्राइवेट या पब्लिक स्कूल के लिए। एलीट हाई स्कूल इसी सिनेरियो में जब गवर्नमेंट की अलाउड रिक्वायर्ड जो सीट्स हैं वो 22 हैं, एलीट हाई स्कूल एक क्लास के अंदर बिटवीन 1 to 5 स्टूडेंट्स रखता है। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास, जैसे इंग्लिश की क्लासेस यूजुअली बिगेस्ट क्लासेस होती हैं, वहाँ पे 10 सीट्स आर द मैक्सिमम सीट्स जो कि एलीट हाई स्कूल ओपन करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो इसकी वजह से सीट्स लिमिटेड रहती हैं ताकि बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैक्सिमम डेवलप हो सके टीचर के साथ, मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग विद द टीचर की अटेंशन, टीचर का जो टाइम स्पैन है एक बच्चे के साथ उसकी एजुकेशन को लेके वो मैक्सिमम रहे, ताकि जब वो आउटकम निकले उसके लिए तो वो भी वैसे ही आए जो कि एक अच्छे स्टूडेंट्स को चाहिए होती हैं आगे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जाके पढ़ने के लिए। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से कनाडा के स्टूडेंट्स को या एलीट हाई स्कूल के स्टूडेंट्स फॉर दैट मैटर have the guarantee admission in colleges and universities in Canada। और अगर वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं तो उनको यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में एडमिशन लेने में ट्रबल नहीं होती। इनफैक्ट दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनको मैक्सिमम स्कॉलरशिप भी मिले जब वो एलीट हाई स्कूल से ग्रेजुएट होके आगे यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं। परफेक्ट, ऑलराइट। So basically यहाँ पे मतलब earlier I mean it told in detail कि जो प्रिंसिपल का फैसल यहाँ पे होना होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइसेंसिंग के लिए, स्कूल के लिए। एंड शी टोल्ड अस introduced us कि वो आपको स्पेसिफिक कोर्सेज करने पड़ते हैं to even qualify for a principal criteria। Yeah. बहुत सारे ईयर्स का एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। कनाडा के अंदर टीचर बनने के लिए या प्रिंसिपल बनने के लिए इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। टीचर्स हैज टू बी लाइसेंस्ड, दे हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड, दे हैव टू बी ट्रेन्ड। तो एक लंबा प्रोसेस होता है टीचर्स का, और टीचर्स का बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसकी वजह से, और उसके बाद टीचर्स का एक लाइसेंस होता है, उसकी वजह से टीचर्स हैव टू मेक श्योर दे आर ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ देयर गेम या ऑन टॉप ऑफ देयर एबिलिटीज टू टीच द स्टूडेंट्स, क्योंकि ना सिर्फ टीचर्स की रेपुटेशन बल्कि उनका लाइसेंस भी क्वेश्चन में आ जाता है गवर्नमेंट के सामने अगर टीचर की क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स, जो कि ये प्रैक्टिस पाकिस्तान, इंडिया जैसी कंट्रीज में नहीं की जाती। कोई भी
टीचर जो अंडर ग्रेड करके या कॉलेज करके निकलता है और वो उसको अगर कोई जॉब नहीं मिलती, तो अ लॉट ऑफ द टाइम इट हैपेंस, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट, टीचर्स आर नॉट केपेबल इन साउथ एशियन कंट्रीज, but a lot of the times teachers are not well trained and well equipped with the materials, and they do not have enough training to handle the student questions or the teaching methods, लेकिन वो फिर भी teachers बन जाते हैं, and schools Exactly. hire them, तो which actually affects the students future in a long run, क्योंकि टीचर्स को तो जॉब मिल जाती है, लेकिन स्कूल्स को एक टेम्परेरी टीचर मिल जाता है, लेकिन बच्चों का एक एक जो फ्यूचर है वो जेपटाइज हो जाता है. राइट, परफेक्ट। ये बिल्कुल इसमें आपने मतलब सच कहा है, और एक रियलिटी है, थोड़ी बिटर रियलिटी है, लेकिन उस चीज को हम फेस करते हैं, चीजें होती हैं, एंड दिस इज हाउ वी आर मूविंग टू इम्प्रूवमेंट। लाइक व्हेन इट बिकम्स अ मल्टी कल्चरल चीजें हो जाती हैं, तो पढ़ने का और स्टाइल और सोचने का स्टाइल बदल जाता है। Yeah, so Emmy, seeing the screen, I can see methods of testing. It's like testing the trees or testing the plants or testing the students. Mhm. Yeah, I got this question, which is really impressing me. I've been asked a lot of time. Actually, the biggest difference between Canadian education in secondary sector from the other countries, specifically Pakistan, is we don't have test. We do not promote standardized test because we believe education should provide equity and to reach every student. Americans sharing the same value as a Canadian. They have this policy, national education policy, which is no kid left behind, as we all know it, right? Trump did a lot of campaign over it. Standardized tests in Pakistan as well as in China, Singapore, and some of the other countries are very competitive. Students are basically they have to concentrate on preparing the test instead of focusing or being taught or being offered a means to the end, not just the work to the ends. So what I'm saying is education is not the goal is a journey to become a whole person. And like the picture showing, this is our provincial menu for school administrator. Basically, for principal administrator to learn how to provide assessment, evaluation, and the reporting to students. Our education is like planting seeds from kindergarten or pre-kindergarten level, and keep watering the seeds, fertilizing, providing sunshine and the shade to the tiny little plant until it can grow into a big tree and a strong tree. So along this journey, teachers and the schools are playing a supporting role. We're not a uh, super strict image like those teachers in other countries. Students and teachers are equal, right? And student can email teacher anytime, can make appointment to talk to teacher. Even if you don't feel like happy with your score, you can appeal to teacher. Oh, maybe you can get a 1 score, 1 mark, or 2 marks back. It's a very democratic classroom, and student success matters than anything. If student failed in one class or one course, there's so many alternatives to, providing, like repeating the class, retaking the class in the same school, or in private sector, or in summer school or night school. That's why we have this credit granting system to be equally designated to private and public sectors, and as well as the summer school in some pre-college level training center, like learning center or YMCA, the community center. They have this adult, or you can call it a continuous learning center, to provide the credit recovery or a credit retaking, repeating courses to grant the student the credit in each of the course. And for the method of testing, like I said, I'm going to show you this
There was great a book on the sorry for the interruption. on There the was a right. point which Emmy was showing in the previous screen. That was night schools or something. Can you move to the Yeah, previous screen, please? Yeah, yeah, night school alternatives. It's like yeah. this is what actually reading this I couldn't understand that. Mm-hmm. Oh, night school, basically, the day school, usually we call day school is from morning to afternoon. In Canada, usually students go to school from 9 o'clock or 8 o'clock to 2:30 to 3:30. No later than 3:30 in school. Mhm. So after school time, we call it a night school. Any courses class starting after 4 o'clock, it can be called a night school. And during the summertime, from because K to 12 sector graduate or end the semester in June, so summer means July to August, right? September is another new semester starting, and the summer school, night school providing the same courses with that in public school because we're using sharing the same curriculum, even the grade book and the reporting system and the creditability are all the same. It's just And time different. That's why student can yeah, choose whenever, yeah, they feel they're okay or they want to study. Now, along with the online hybrid study mode providing, students have more alternatives to enjoy a better learning experience. Yes, Fauzia? Perfect, perfect. I mean, and I think this is like, over here, I don't know, you might be familiar with it or not, because over here, teach student when they go back home, basically they take a lot of burden with them of homeworks and, so if you mean if the school is running till 3:30, they are providing them, do they take like the stuff for homework kind of the stuff which we have the concept over here the home, or it's all is been done during the school timing? Oh, that's a very good question, Fauzia. Because I've visited Pakistan, right? And I did my research in China, South Korea, Singapore as well. I know how teachers assign homework in those classrooms. It's very different from the schools in Canada. Because myself is a beneficiary of Canadian education. I went to high school here in not here in Vancouver. I come from Vancouver, then I went to college, and now I'm doing my graduate degree for the second time. My prior degree was the program, the major in business. Now I'm doing in education. So along my learning experience in Canada, I have been benefited a lot. Not mention of financial support because we don't need to pay the tuition fee as a Canadian. Oh, we don't need to pay anything from Yeah, kindergarten because to grade 12. that's the major And factor, for any Pakistani when we are talking about, moving for the to the school, Canadian high school, and they have to deal with yeah, all the financials, bank statements, and yeah, this and that to move to Canada, yeah, at this stage, yeah, and it's pretty difficult. So, do yeah, you I think, understand. any like, a question came to my mind while discussing this So thing. to The answer your student, question, yeah, to answer yeah, your question, Fauzia, sorry. let me explain to you. Like on the right side, if you can see my screen, which is a student grade book created by teachers. And on the left Mhm. side is the provincial regulation and suggestion. Also, actually, is a template to train teacher how to make the grade book. So our marks, for example, students are very into and they pay a lot of attention to their final marks, right? Our final Mhm. marks are not coming from the final exam. We don't have a one exam ruling system. We have this percentage chart, like a pie, to make up your final scores. It is composed by knowledge, communication, application, and critical thinking or technology. So for this two
a major category and 4 pillars: knowledge and understanding, thinking, and application. A teacher has to create all the assignment and midterm or a final or project cumulative activities to include all these 4 categories of assessment. So you can see on the right side on student grade report, right? This course is advanced functions. I just hiding the student name for credential. So he's a student Mhm. from Pakistan. Actually, he already graduated and pending university offer right now. It's a Okay. real great book. I borrowed it from teacher. So if you can understand the percentage, you guys are very good at mathematics, I know. So the total No, we are 100%. not Russians. Very good. I know. Standardize the test, train the best mathematical person, right? And engineering, I know. So 100% pi is divided or we can say composed of quizzes, assessment. AFL means assessment for learning, and some of the unit test, a midterm, and the culminating activities, and the final exam. Each of the units is weighing 10% or 5% depending on teacher's design, and every teacher is different. That is why your teacher decide how you study in this course or how you're going to be guided in this course. There's no standardized test, as I repeated. It like same course, right? Advanced function. You might be working with a teacher who is a young teacher, like our teacher. This teacher is very young and he's a genius. He's very good and like very how can I say, very friendly with the young students as well. So he might be an easy marker and give a higher marker than the other class, other teacher who might be, a little bit nerdy or a little bit tough on the grading. So it's all depending on teacher. And each of the unit sector takes up 10% to 5%, and the final exam takes up no more than 30%, maximum 30%. So it's Mhm. quite like your post-secondary education, right? We do deal by deal by deal and to make this a big pie. So each of the piece student has an opportunity to achieve higher score. Or this time I didn't do well. Oh, I could study harder. Next time I would certainly improve. So you always have a second time, next chance to balance your entire grade book. That is why no standardized test. And this is our provincial report card. And on the report card, on the back of the report card, we also gave students the comment in terms of learning skills, expectations, collaborations, and cooperations, sort of activities, rating, and with the comment. This provincial report card in public school, private school are all the same, and we have to report to the same system, which is called ANSYS system, Ontario Student Information System. In other provinces, they have their own provincial system as well. I'm sorry for the interruption again, but because the question came to my mind and I might skip. The When we are talking about the grades of the students, Amy, basically, like every school do they have a certain criteria of passing the student? For example, maximum the ratio of your grades, which was like percentage according to 50% was of the school remaining, or the school produce in percentage much better than that. Speaking of the percentage, because we do not pursuing, we're not in the pathway to choose after the end of the term, like how much you have to get. As long as you pass 50, you pass the course, you get a credit. But
for those A student or a student who have a strong expectation for getting into very good university like University of Toronto, of course you need a grade, right? Then you need to study hard. But there is no specific percentage like you just asked in a school or in any school, any class that's saying, oh, you have to, teacher, you have to pass 50% of the student or 70%. No, teacher's No, job yeah. is just to Okay. teach. Yeah, yeah. Okay. So usually, like the teacher puts such efforts which make the student to get through for the universities or colleges. Or obviously, it depends upon the individual efforts as well and the mode of study and all that. So right. Is it Sorry. like What? we have finished? We have done with the with this the presentation and all that. I don't quite understand, Fauzia. You're asking about the question of applying university? I'm saying, Amy, your presentation, which you are, like showing it over here on the screen, is completed now, done. We are finished with Okay, it. okay. No, no, no. All right, I'm so I asking can, you. you It's want not like me, I'm asking you to end up. I'm saying, like, are we done? oh, I don't understand. Do you have a time limitation? Should I continue or not? No, yeah, little bit. I can say. I mean, yes, because now I was just asking because I wanted to finish it today so that we could quickly take the questions which people are asking over here Oh, sure. online, so that we could take that Okay, and we could answer. okay. And later, maybe next time we can have another session regarding, because it was really interesting to me to know about in detail the studying pattern of Canada. So just let me we can have another session where we can explain Yeah, things sure. later on, so that I could take now, because the otherwise the questions will remain unanswered and people Okay, might sure. It's find my this pleasure. unheard Yeah, I scenario. understand. Yeah, so I think most of the questions now Faisal will be answering. Basically, Faisal पूछा हुआ है उन्होंने कि what are the requirements for grade 8 standard student fee के बारे में थोड़ा सा आप बता दें फैसल उस चीज के लिए. ओके तो कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर स्टूडेंट कनाडा में पढ़ने के लिए आ रहा है एज अ वीजा स्टूडेंट, तो उसकी एक्सटेंडेड फी रहती है $20,000 कैनेडियन डॉलर्स. क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया यानी साउथ एशिया के लिए एलीट हाई स्कूल ने अभी अपने डोर्स ओपन किए हैं फॉर द फर्स्ट ईयर, इसी वजह से school is inclined towards giving good scholarships to the students who deserve it, who are up to the standards with their grades from the previous years of education. उसकी बेसिस पे स्टूडेंट्स को अच्छी scholarships can go as high as up to 50% of the scholarships they get on the tuition fee. लेकिन एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट की ट्यूशन फी रहती है अराउंड $20,000. और उन्होंने साथ में ये John Alam, I believe I can see the comments here as well. He asked what are the possibilities for guardian visa. अब हर वीजा की जो possibility होती है वो different रहती है. It varies from a person to person, a file to file. I guess Fozia would be the best person who is expert enough to explain and answer this question in terms of the visa possibilities. लेकिन जहाँ तक एक एवरेज वीजा या एवरेज एक गार्डियन का ताल्लुक है, कैनेडियन इमिग्रेशन इस चीज को अलाउ करती है कि अगर एक स्टूडेंट 18 ईयर से छोटी एज का है तो वो या तो अपने लिए कस्टोडियन कनाडा में अवेलेबल करे, या फिर वो अपने किसी फैमिली मेंबर को या अपने पेरेंट को जो उसका गार्डियन के तौर पे कनाडा में साथ आ सकता है until the student turn 18. जी फौजिया.
हाँ, मैं उसको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इन डिटेल आंसर कर देती हूँ जॉन आलम। बेसिकली जब हम बात कर रहे होते हैं यहाँ से मूव करने की, और हम गार्डियन को लेके चल रहे होते हैं, पेरेंट एंड गार्डियंस, या मतलब फादर और मदर को, तो आपको ये बात नोट रखनी चाहिए कि जो एक तो कस्टोडियन हमें लाजमी प्रोवाइड करना होता है, द स्कूल कैन प्रोवाइड द कस्टोडियन, या फिर हम वहाँ पे उसको अरेंज कर सकते हैं, मतलब जो आपके रिलेटिव है वहां पे कोई उनके थ्रू, या इस तरह से कोई भी बंदा मतलब पीआर होल्डर है वो कस्टोडियन बन सकता है। लेकिन एज लॉन्ग एज मूविंग टू कनाडा एज अ गार्डियन, उसमें जो मदर की या फादर की एप्लीकेशन होती है वो हमें साथ में अलग से डालनी पड़ती है। वो उस वक्त मतलब वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते, सॉरी, विजिटर के लिए अप्लाई करते हैं, और वहां पे जाके अब ऑनवर्ड्स बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनकी स्ट्रीम्स में, जिसमें वो बदल रहे हैं चीजों को, कि जो पेरेंट वहां पे गया है वो बाकी काम भी कर सकता है। बल्कि आज की हमारी इस डिस्कशन में एक चीज रह गई थी, वो फैसल, वो तो मतलब जरा उस पे थोड़ा सा आप बयान कर दें उस चीज को प्रॉपर्ली, कि जो लोग जिस तरह हाई स्कूल के बाद मतलब जब हम बच्चों को भेजते हैं वहां पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो वो बेसिकली उनके पास होता है कि दे कैन वर्क 20 आवर्स पर वीक। तो ऐसी क्या हाई स्कूल के लिए भी अपॉर्चुनिटी, हाई स्कूल के अंदर इनका वो कुछ इस तरह का सिस्टम होता है फैसल? ओके, इमिग्रेशन ने भी रिसेंटली क्योंकि a lot of the students are coming from South Asia now. It's becoming a big trend. South Asia से instead of कि स्टूडेंट्स कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए आए, वो अब ग्रेड 9, ग्रेड 10, ग्रेड 11, ग्रेड 12 में आना शुरू हो रहे हैं साउथ एशिया से। इसी के लिए अभी स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि स्टूडेंट्स हाई स्कूल के टाइम पे एज अ वर्क परमिट काम तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाई स्कूल स्टूडेंट्स को वर्क परमिट नहीं मिलता एज अ जॉब। लेकिन स्कूल उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि वो 2 सेमेस्टर्स तक एक 4 साल के डिप्लोमा, जो ग्रेड 9, 10, 11, 12 4 साल का डिप्लोमा है, इसमें 2 सेमेस्टर्स तक के लिए वो को-ऑप का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिसकी बेसिस पे वो को-ऑप वर्क परमिट्स कैनेडियन इमिग्रेशन से वो ले सकते हैं, और वो उस पे काम कर सकते हैं, अपना वर्क एक्सपीरियंस यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि आगे ना तो उनको सिर्फ यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन के लिए हेल्प करेगा, बल्कि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा जब वो जॉब के लिए जाएंगे, क्योंकि दे गेट अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस व्हाइल दे आर स्टडीइंग इन हाई स्कूल एज वेल। आई होप कि ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अगर इसमें कोई बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन यानी वो दो अपने, यू मीन टू से कि वो दो अपने क्रेडिट्स को यूज कर सकते हैं, और वो उनके क्रेडिट भी हो जाएंगे, उनको जॉब करने का मौका भी मिल जाएगा, उस एक्सप्लोर करने का, जो मतलब वहाँ की जॉब मार्केट है फॉर एग्जांपल, वट एवर हम उस चीज को लेते हैं, जहाँ पे काम करने का या वर्क करने की अपॉर्चुनिटी है वो भी मिल जाती है, और उसके साथ साथ उनके वो 2 क्रेडिट भी हो जाते हैं। तो क्या वो जो 2 क्रेडिट होते हैं फैसल, उनमें जरूरी है कि वो उसी रेलेवेंट सब्जेक्ट के हवाले से काम करें? फॉर एग्जांपल जो बिजनेस पढ़ रहा है बिजनेस से रिलेटेड काम करे, या जो कंप्यूटर्स पढ़ रहा है कंप्यूटर्स से रिलेटेड काम करे? Yes, we prefer that, क्योंकि co-op का मतलब ही ये होता है कि it is related to the education that you're actually taking, so you can get a hands-on experience in the field of education that you have, or the education that you're planning to pursue in the future. तो जो बच्चा जिस फील्ड में आगे पढ़ना चाह रहा है, या जो उसके रिलेटेड कोर्सेज हैं जिसके अगेंस्ट वो कोऑप ले रहा है, ऑफ कोर्स दोज आर द कोर्सेज स्टूडेंट हैव टू टेक फॉर द कोऑप। और बहुत जगह पे स्कूल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है और हेल्प करता है कोऑप की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में कनाडा के अंदर। और if a student is studying online in other countries, elite high school do have the collaborations with multiple institutions and businesses globally, जहाँ पे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जाके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने की ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन।
ओके, ग्रेट। दैट्स रियली मतलब अमेजिंग कि इस चीज़ के बारे में उनके उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, बच्चों के पास वो जाके पढ़ने की। फैसल, बहुत सारे क्वेश्चंस में एमी शायद उस पे बोरिंग फील कर जाएगी, क्योंकि अब जो जितने क्वेश्चंस होते हैं वो मूवमेंट के हवाले से आ जाते हैं, वो इमिग्रेशन के हवाले से आ जाते हैं, आपको पता है। एंड आई वुड मतलब इंस्टेड के मैं बच्चों के पहले उन क्वेश्चंस को चूज करके आंसर करूंगी जो रिलेटेड टू स्कूल या बच्चों के हैं, ताकि हम बाद में भी बाकी चीजों को देख सकें। माय सन इज इन क्लास 8, कैन ही अप्लाई दैट एंड इट नीड्स आईएलटीएस स्कोर? जी फैसल, आईएलटीएस का स्कोर चाहिए या मतलब ये जो है बच्चा वहां पे उसके बगैर पढ़ सकता है, वो क्या सिनेरियो है? एलीट हाई स्कूल एज इन स्टूडेंट्स के आइल्स को रिक्वायर नहीं करता। जब स्टूडेंट एडमिशन अप्लाई करता है स्कूल की एप्लीकेशन के लिए, तो स्कूल उसके एक सेकंड फैसल, आपने कहा एलीट हाई स्कूल नहीं रिक्वायर करता, इज इट लाइक फॉर द स्कूल सिनेरियो एवरी स्कूल डज नॉट रिक्वायर? जब बच्चे ने यहाँ से मूव करना हो पाकिस्तान से, तो कोई भी स्कूल हो, इट प्राइवेट इट है? इट इट वेरीज फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। हर स्कूल का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट बोर्ड्स हैं, जिस तरह पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें भी डिफरेंट क्राइटेरिया डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए होता है। एलीट हाई स्कूल की पॉलिसी ये है कि हम लोग आइल्स रिक्वायर नहीं करते एज अ स्कूल। वी लुक एट द स्टूडेंट्स ग्रेड, बेस्ड ऑन द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑफ एजुकेशन। उनको कुछ स्टूडेंट्स को ईएसएल की क्लासेस लेनी होती हैं, और अगर उनकी ईएसएल की क्लासेस को एग्जेम्प्ट किया जाए, उसके लिए स्टूडेंट का इंग्लिश का टेस्ट होता है। व्हेन द स्टूडेंट गेट्स टू कनाडा, बिफोर दे स्टार्ट देयर क्लासेस, उनका उनका एक इंग्लिश का टेस्ट होता है, जिसकी बेसिस पे उसका इंग्लिश लेवल एनालिसिस किया जाता है। अगर स्कूल के टीचर्स को ये लगे कि इसकी इंग्लिश का क्राइटेरिया इतना अच्छा नहीं है जिसकी बेसिस पे ये क्लास में एक अच्छा एक कंपेटिटिव स्टूडेंट की तरह पढ़ सकेगा और कोर्स मटेरियल को समझ सकेगा, तो उसको पहले ईएसएल, इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज के कुछ 1 या 2 कोर्सेज करवा दिए जाते हैं, ताकि उसका इंग्लिश लेवल इनहेंस किया जा सके। उसके बाद उसको रेगुलर क्लासेस में डाल दिया जाता है। अब वो जो ईएसएल क्लासेस हैं उनका फायदा ये होता है कि ना सिर्फ स्टूडेंट एक इंग्लिश लैंग्वेज सीख लेता है, बल्कि वही क्रेडिट्स या वही कोर्सेज जो उसने ईएसएल के लिए इंग्लिश अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए पढ़े होते हैं, वो यूज कर सकता है वही क्रेडिट्स को अपने हाई स्कूल डिप्लोमा के लिए। तो टेक्निकली वो इंग्लिश की क्लासेस पहले पढ़ता है और बाद में बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ चला जाता है, जिससे बर्डन कम रहता है और लैंग्वेज इन्हेंसमेंट जो सी है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। एज वी हैव ऑलरेडी मतलब जिन लोगों का हमने एडमिशन करवाया है उनके साथ वो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं कि हमने उनकी ईएसएल के कोर्सेज को वो किया। काशिफ कामरान, समरी इंट्रोडक्शन जो है ना वो चीज़ों के लिए जो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी है उसके लिए वो काफ़ी लंबा है, लेकिन वो अवेलेबल है, हम बाद में इस चीज़ को देख सकते हैं और कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये फैसल कि ऑन मैट्रिक बेस क्या हमारा एडमिशन हो सकता है? चौधरी बिल्कुल अहमद माया ने पूछा है। बिल्कुल, मैट्रिक बेस्ड स्टूडेंट्स का एडमिशन हो सकता है। स्टूडेंट का ग्रेड 9 और ग्रेड 10 का रिपोर्ट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल विद द एप्लीकेशन। उसकी बेसिस के ऊपर स्टूडेंट का एनालाइजेशन किया जाता है, उनकी असेसमेंट की जाती है कि ये किस लेवल ऑफ एजुकेशन पे ये पूरे आएंगे। कुछ क्रेडिट्स उनको ग्रांट किए जाते हैं जो उनकी ऑलरेडी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, विच इज़ ग्रेड 9 एंड 10। तो रफली 9 और 10 के क्रेडिट्स उनको ग्रांट्स कर दिए जाते हैं और वो 11 और 12 अपनी कनाडा के कंप्लीट कर सकते हैं। अब फैसल इसमें इसमें कोई एज लिमिट है? नहीं, स्कूल की तरफ से एज एन एज लिमिट नहीं है। हाउएवर, अगर एक स्टूडेंट है जो कि एक रेगुलर स्ट्रीम में आ रहा है, जो कि एक रेगुलर कंटिन्यूस स्टूडेंट है, जिसने ग्रेड 9 पढ़ा, 10 पढ़ा एंड राइट अवे गोइंग टू ग्रेड 11 एंड 12, उसके लिए स्टूडेंट स्टडी परमिट के लिए आप स्टूडेंट्स को वीजा इनविटेशन लेटर प्रोवाइड करता है। बट जी जी। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है, लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ देख रहा था कि वो मैं 40 इयर्स किया हुआ है या मैं 35 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट हूँ, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को इनविटेशन लेटर कनाडा के लिए नहीं दिया जाता, बिकॉज दे आर नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट, दे आर जस्ट
some of the students are just trying to find a opportunity जो कि वो यूटिलाइज कर सके कनाडा आने के लिए या कनाडा मूव करने के लिए। तो उस सिचुएशन में एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह उनको इनविटेशन नहीं दिया जा सकता। उसके लिए स्टूडेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अपनी होम कंट्री में रह के कनाडा का हाई स्कूल का डिप्लोमा ऑनलाइन कंप्लीट कर लें। उनके वही क्रेडेंशियल्स रहेंगे जो कि एक कैनेडियन स्टूडेंट जो कनाडा आके पढ़ता है जो क्रेडेंशियल्स उस स्टूडेंट को मिलते हैं। उसके बाद वो स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के बाद आगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके वीजा अप्लाई कर सकता है एज अ पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट। लेकिन हाई स्कूल एक रेगुलर स्टूडेंट्स से हट के वीजा के लिए जो इनविटेशन लेटर होता है स्कूल की तरफ से वो प्रोवाइड नहीं करता अनलेस एंड अनटिल इट्स अ स्पेशल सर्कमस्टांसेस जहाँ पे एक सिचुएशन मेक सेंस कर रही हो, जैसे कि मेडिकल है या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज थी या स्पोर्ट्स रिलेटेड या रिलीजियस एजुकेशन या कुछ इस तरह का जो कि मेक सेंस करती हो, जिसकी वजह से 1-2 साल का गैप हो वो जस्टिफाई हो सके। अदरवाइज एक स्टूडेंट जिसका गैप 4-5 साल का 6 साल का गैप है या वो ऑलरेडी अंडर ग्रेड या मास्टर्स कंप्लीट कर चुका है और वो अब दोबारा से हाई स्कूल में आना चाहता है जो कि जस्टिफाई नहीं होता, उसके लिए स्कूल वीजा इनविटेशन लेटर प्रोवाइड नहीं करते। ऑलराइट शहजाद, आई थिंक आपका क्वेश्चन अरसलान इकबाल का भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी 35 ईयर एज है और मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सलमान, let me point this out here. जो 35 इयर्स एज है या मैं यहाँ पे देख रहा था इन द कमेंट्स कि कोई पीएचडी है, जस्ट टू लेट यू नो गाइस, इट्स अ हाई स्कूल। हाई स्कूल का मतलब है ग्रेड 9, 10, 11 एंड 12। अगर आपने पीएचडी की हुई है, देयर इज नो पॉसिबल वे और देयर इज डजंट मेक एनी सेंस कि आप पीएचडी के बाद आप ग्रेड 9 के अंदर वापस आना चाहेंगे या ग्रेड 10 में वापस आना चाहेंगे। So basically, I think they are asking for the other opportunities as well. और वैसे भी पीएचडी के बाद भी अगर कोई वो उसका ग्रेड रह गया है तो स्कूल को करवा देना चाहिए ऐसा। स्कूल इसमें मना नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट्स एलीट हाई स्कूल के पास ऐसे हैं मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद, let's say as our principal Amy said that she did her first masters in business and later on now she's doing the second masters or the graduate education in the education sector. इसी तरह से बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपनी फील्ड को चेंज करना चाहते हैं, तो उनको पहले अपने बेसिक प्री रिक्विजिट कोर्सेज चाहिए होते हैं जो कि हाई स्कूल में लेने पड़ते हैं उनको। तो स्टूडेंट्स कैन कम टू टेक 1 or 2 कोर्सेज, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि एक पीएचडी का स्टूडेंट है जो हाई स्कूल के कोर्सेज पढ़ना चाह रहा है अपनी फील्ड को चेंज करने के लिए, लेकिन उसके लिए उसको कनाडा आना पड़ेगा। अ स्टूडेंट इज मैच्योर इनफ कि वो अपनी होम कंट्री में रह के ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ सकता है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान और इंडिया में ओ लेवल और ए लेवल कंप्लीट करते हैं, लेकिन आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता उनका क्योंकि उनके नंबर्स कम हैं या उनको कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज चाहिए होते हैं जिसके लिए उनको पाथवे कोर्सेज में जाना पड़ता है या फाउंडेशन कोर्स में जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के, जो कि उनको बहुत महंगा पड़ता है। उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अपनी होम कंट्री में बैठ के 1 या 2 कोर्सेज जो स्पेसिफिक कोर्सेज उनको रिक्वायर्ड थे आगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए या अपने कोर्स या अपने क्रेडिट्स को या अपने फाइनल ग्रेड को इनहेंस करने के लिए, वो अपने कोर्सेज को सिर्फ वो 1 या 2 कोर्सेज पे के लिए साइन अप कर सकते हैं और अपने क्रेडिट्स को इनहेंस कर सकते हैं, अपने जो ग्रेड है उसको इनहेंस कर सकते हैं आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए या आगे स्कॉलरशिप लेने के लिए। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स अपनी होम कंट्री से ही अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए कनाडा आके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कनाडा के लिए बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड हैं बिसाइड्स द ट्यूशन फी। ट्यूशन फी एक एक्सपेंस है जो कि स्टूडेंट को देखना पड़ता है, उसके साथ लिविंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सेटल डाउन एक्सपेंस। एक नई कंट्री में आके रहना इट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो वो सारी चीजें भी कंसिडर करनी पड़ती हैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को कि एक नई कंट्री में जाना और वहां पे जाके सेटल डाउन होना है और एक फॉरेन करेंसी के अंदर आपको खर्चा करना है, एंड एट द टाइम व्हेन यू कैन नॉट इवन
get started with the job right away. एक टाइम लगता है एक नई कंट्री में आके सेटल डाउन होने में और अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में. परफेक्ट फैसल, यू आर वेरी राइट. एक्चुअली बेसिकली होता ये है कि ऐसे सिनेरियो में बंदे को अपना वो एफर्ट भी डालनी पड़ती है और वो लर्निंग्स के लिए भी रेडी होते हैं. इसी वजह से उनको अगर जॉब करने की अपॉर्चुनिटी ग्रेड 9 10 11 12 में मिल जाती है तो वो उन चीजों से फेमिलियर भी हो जाते हैं. अभी एमी somebody has requested Salman Khan that if we can share the presentation with him. The email is mentioned as well. If you allow us, we can share the presentation on our page, down in comments, so that anybody who wants to know, they could know about Elite High School and the, methods. And is it like, I have even no idea whether we can share it, on the site or no. This is why we have the educators to help us teach. Thank you so much for the question, and I'll be honored if anyone asks for the presentation. If you don't mind, Fauzi, I can share with you, and just be kindly share with this audience. His name is Salman Khan. Sure, or other sure. people who are interested in. Yeah, thank you very much, Amy, for staying with us. Basically, there are many questions which I don't think so I will be able to right now answer, because it's like at 6:30 according to the time. We already have taken 1 hour 6 minutes, so we can have another session regarding this, inshallah, soon next time, in December as well, which is like where we will discuss about the intakes, so that when the student is applying from here, from Pakistan, they could come. Like it's earlier we had students got registered for February intake, and later we can take them for May intake or September intake. That's why we wanted, like it could be and to be in touch for the students, and providing for their betterment a facility that they could get it. So we can have another session where we can explain the things. Sadaf, your daughter, if is doing FSC in medical, you can she can join if the Elite High School, because in FSC, if she has not yet completed, she can get the equivalence of her previous grades. And right, I mean, am I right in explaining that? So, and can get the the grades, equivalence, and the rest of the credits which are remaining, she can appear for that and get the high school graduation diploma. And Amy, what are the minimum credits one should like get? For example, if a person, which is a question of FSC, FSC is grade 12 basically. I mean, if you are not familiar with that. So if she is an FSC student and she gets the equivalence of her previous grades, at least how many credits she should get from Elite High School to get the diploma of the school? Okay, thank you for asking this question. And for FSC, regardless, it's depending on how many credit the principal going to grant as equivalency. I need to see the student transcript. And in Ontario, we have a 30 credit, 30 credit required for high school graduation. There are 18 compulsory courses and 12 elective courses. Plus, students need to pass, the Ontario Secondary School Language test in grade 10. But it's a very easy test. Like I said, we don't have quite a lot of standardized test. That test just for literacy, and basically it's like like average minimum level to test the provincial student language and the literacy level. And if a student cannot pass the OSST, and don't worry about that, we provide the OSSC, the replacement course, to give a student second chance to finish the OSSIL, to finish the OSSLT obligation.
So and away from the courses, students need to involve with the community. Got 40 hours now because of pandemic reduced to 20 to 40 hours community work in signed by teachers, and then Uh, you're Amy, ready to graduate. sorry. Yeah. I believe the question Fozia had asked, and Fozia, I'll answer that question as well. The question that Fozia had asked is, what is the minimum number of grades a student needs to take from elite high school to graduate from elite high school with diploma? So the answer is minimum of 1 year of education, which is equivalent to minimum of 8 credits. 8 क्रेडिट लेने पड़ते हैं, या Yes. 1 साल की एजुकेशन विच इज इक्वल टू 8 क्रेडिट्स वो स्टूडेंट को लेनी पड़ती है ग्रेजुएट होने के लिए। विच मीन्स कि अगर एक पार्ट टाइम स्टूडेंट है जिसको 1 2 3 4 क्रेडिट्स चाहिए सिर्फ अपने अपने कोर्सेज को इनहेंस या अपने ओवरऑल ए लेवल ओ लेवल या जो भी पहले उसकी एजुकेशन है उसको इनहेंस करने के लिए, उसको डिप्लोमा नहीं मिलता, उसको सिर्फ उसको रिपोर्ट कार्ड्स मिलती हैं जो कि एज अ प्रूफ यूज होती हैं आगे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए, एक्सक्यूज मी। लेकिन एक बच्चा जो फुल टाइम 1 साल मिनिमम एजुकेशन कंप्लीट करता है एलीट हाई स्कूल से, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द डिप्लोमा टू गेट अ डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, जो कि ना सिर्फ उसको हाई स्कूल ग्रेजुएट कि उसको प्रूफ मिलता है, बल्कि वो एज एन ओंटारियो कैनेडियन हाई स्कूल ग्रेजुएट कंसिडर होता है ग्लोबली। All right, Sadaf, I hope you got the answer. Sadaf, आपने कहा कि 78% उसके marks हैं. Basically, Sadaf, the elite high school will assess all 3 years grades और उसके बाद equivalence आपको मिलेगी. लेकिन फिर भी अगर आपने डिप्लोमा लेना है तो फैसल ने आपको बता दिया कि मिनिमम आपको 8 क्रेडिट्स पूरे करने होंगे अपना डिप्लोमा अवेल करने के लिए. लेकिन अगर आपको सिर्फ अपना आगे प्रोग्राम में एनहेंस करना है तो वो आपको उन क्रेडिट्स का सर्टिफिकेट मिल जाता है. सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर दैट. लेकिन आपको मिनिमम अगर जाने का आप सोच रही हैं सदफ, तो वो मुझे पता है चीज़ों के लिए कि वो आपको एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल की वो चीज़ें लेनी पड़ेंगी, इंक्लूडिंग द इंग्लिश जो ESL कोर्सेज हैं. बेसिकली बेशक बच्चा करना भी चाहे अपना आइल्स दे भी दे, FSC के बाद वो दे सकते अपना आइल्स दे दे, लेकिन स्कूल को एटलीस्ट आपके 8 से 12 क्रेडिट लेने पड़ेंगे टू गेट द डिप्लोमा. Yes. So thank you. Now, Fozia, जैसे अभी, for example, I know there are some students that have been enrolled by you for the February intake, and I believe you've already have students who are coming in for May intake. क्योंकि May intake की अभी already enrollment शुरू हो गई है, जो कि जनवरी के फर्स्ट वीक में I believe deadlines हैं उनकी. तो इसके लिए students need to understand one thing when they are interested, and I see a lot of people are interested in going to Canada to come to the class to study. तो उसके लिए students को they have to keep that in mind, they have to plan ahead. अब क्योंकि वीजा एप्लीकेशन, वीजा प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंट्स, इसमें कुछ टाइम लगता है और 3 से 4 महीने लगते हैं वीजा आने में. तो और अगर एक बच्चे को कंटिन्यू स्टूडेंट रहना है, और लेट्स अज्यूम एक स्टूडेंट है जो ग्रेड 9 में आना चाह रहा है, तो उसको ग्रेड 8 के बिगिनिंग में या फर्स्ट क्वार्टर में प्लान करना पड़ेगा ग्रेड 9 में अप्लाई करने के लिए, सो दे कैन यूज देयर मिड टर्म्स एज अ प्रीरेक्विजिट टू गेट अ कंडीशनल ऑफर फ्रॉम द स्कूल, ताकि स्टूडेंट्स अपनी सीट को सिक्योर कर सकें और अपने इमिग्रेशन के लिए, अपने जो भी वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकें, ताकि वो एक इन टाइम एप्लीकेशन को फाइल कर सके. वरना उनको उनकी स्टडी में गैप आ जाता है अगर वो सितंबर इनटेक में और अगर वो थ्रू द ईयर अगर विंटर इनटेक में आना चाह रहे हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं रह जाता है एडमिशन अप्लाई करके और वीजा अप्लाई करने के लिए. All right, thank you very much, Faisal. Basically, काफी मतलब टाइम हो गया है हमें. I'm really grateful, Emmy, for joining us. और thank you very much for giving us this opportunity that we could, know in detail about the elite high school and about a different perspective of getting, education from Canada for high school, and people can send their children in grade 8, 9, 10, 11. Thank you very much for joining us. And you have Thank any you, message? Fozia, for invitation. Thank you, Fozia. Thank you for your time. Anything And to say?
We'll Faisal, एक definitely minute. talk later. Thank Amy, you. you have Nice to anything share. to say, a message to the students or to the people? Mm-hmm. You have Oh yeah. anything? So yeah. So it's my pleasure to be here and presenting our education system. And if you have any further question, can contact Fauzia as our very good agent service in Pakistan. And I Yeah, have a sure. viewing a lot of questions here regarding the system. I'm glad I can help. If anybody needs a presentation or questionnaire, you can be the connector to get me on board and answer the question. Happy to help. And Thank you hope very to much, see you in Amy. Canada. And Mm. yeah, Okay, thank you thank you very very much. much, and thank you, And viewers, for before, watching. basically, Sorry, what, Fauzia? yeah, thank you very much, Amy. Basically, when I started, you could not, attend that. That was in Urdu when I started, basically, and I left a Mhm. message for the people, for our audience that they should, do something better for the other persons. This is, besides being, all the time entangled with daily petty issues and activities. So this is what we are doing. We are doing for the betterment of the people, giving them an opportunity. And I really am grateful that you spared time to join us. Thank you very much. You're welcome. And this is the best year in the history, I guess. This is the best year for international student or anybody who want to immigrate to Canada. Start applying Sure, just because Amy. of a we are pandemic. we Yeah. are keeping Good our luck. fingers crossed and wishing to see you and meet you soon. Yeah. Good luck to All you right, Amy. in Thank you very much. Look Thank you, forward Faisal. to seeing Thank you you next very time. much for. Pleasure, Fauzia. Thank you Have for a having great. me. And we'll definitely talk soon with the new topic and new discussions. Thank you very much, Faisal. Pleasure. Yes, sure. Thank you. Okay, Have Allah have a Hafiz. great evening. Bye. Bye. Take care. Bye. Bye.